Hello everyone. In this section we will be discussing about corridor lighting. As you can see in figure 2.3a, it's a lighting. It's a diagram for schematic diagram for corridor lighting. And this, suppose in a corridor is a long passage, where we have to travel. So we need light at different interval of time, and these lights are equally spaced, as you can see. So these lights need to be controlled. All these four lights need not to be glowed at a particular time. And suppose you are standing at position A and you have to travel to position B. So from position A to position B, there are different stoppages. And these stoppages, what you will be doing is, the basic concept behind corridor lighting is that you have to switch on S1 to glow this, and then you have, when you reach this particular location, then you will switch on this, and on switching this S2, this lamp will glow off and this lamp will glow on. Then again, on traveling to this position, you will be turning on this switch. Turning on this switch will lead to glowing off this lamp and glow on this lamp L3. Then again you will be traveling to a distance, then you will reach a position where S4 is placed, and then you will change or glow the turn on this S4. This will lead to again glowing of the lamp, and now L4 will glow. And then on reaching your final destination, you will just turn on this switch, and this lamp will glow. So traveling from location A to B, you are provided with 4 number of lamps, which are being controlled by 5 switches. So this is the basic concept behind corridor wiring. Then if you compare this these two diagrams, you can see it very well that these two arrangements are this and this, and these neutral and live connections are being looped over here with these are looped over here for further connection. So you can see it very well in all the switches that you are provided with neutral and live connections. So these two were the neutral and live connections. From figure, these two wire arrangement for every lamp are the neutral and live connections. Now these 4 lights are placed over here. Then these 5 switches are these switches that are used for governing these lamps. Now what will happen is, because of this looping, when you move ahead of a particular lamp, means when you have traveled this much distance and you are turning on or off this or changing the position of the switch, this light will glow off and this light will glow on. Then again this looping, because this looping is the main idea behind in turning off this light and turning off this light. I hope you guys would have got some idea of this. ये सिंपली एक कॉरिडोर में हम लाइट लगाते हैं, इसको हम गो डाउन लाइटिंग भी कहते हैं। अगर हम किसी एक जगह पे खड़े हैं यहाँ पे और हमें यहाँ जाना है, तो इसके बीच में बहुत लंबी डिस्टेंस अगर है तो हम बहुत सारे लैंप्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने 4 लैंप्स यूज़ किए हैं, इनके लिए हम 5 स्विचेस का यूज़ कर रहे हैं। करना हमें ये है कि जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें जाना है, तो हम इस स्विच को चलाएंगे। इस स्विच के चलने से ये लाइट जलने लगेगी।
अब जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम इस स्विच को चलाएंगे और ये लाइट बुझ जाएगी। उससे क्या होगा कि ये लाइट बुझ जाएगी जब हम, और ये लाइट जल जाएगी। फिर जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम इस स्विच को चलाएंगे, इस स्विच को चलाने से ये लाइट बुझ जाएगी और ये लाइट जल जाएगी। फिर जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम इस स्विच को चलाएंगे, इसके वजह से ये लाइट जलेगी और ये लाइट बुझ जाएगी। जब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे हम इस लैम्प को जलाएंगे और इस लैम्प को जलाने से हमारी ये लाइट बंद हो जाएगी। ये जो एक के बाद एक कंसेक्यूटिव लाइट जल रही हैं और बुझ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो रहा है इस लूपिंग अरेंजमेंट की वजह से, जो कि स्विच से कनेक्टेड है, स्विच के एक एंड से। आई होप you people have got a bit of